آج کے ٹاپک کی طرف. The contents of the today's lectures are central processing unit. First of all, we will discuss the central processing unit. Central processing unit کیا ہے. Then the CPU overview. What does the CPU do? CPU history, components of the CPU and the types of the CPU. آج کی کلاس میں یہ کریں گے. اگلی کلاس میں پھر ہم مدر بورڈ اور اس کے بارے میں پڑھیں گے. کلیئر. تو what is CPU? Alternately referred to as a processor, central processor or microprocessor. The CPU pronounced as a CPU. دیکھیں یہ آپ کو دیا گیا اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ CPU ہے نا, is the central processing unit of the computer. So there are different names اس کو لیا جاتا ہے. کوئی اس کو پروسیسر بھی کہتا ہے, کوئی اس کو سینٹرل پروسیسر بھی کہتا ہے, کوئی اس کو مائکرو پروسیسر بھی کہتا ہے. سو جو بھی نام ہو یہ سب کے سب ایک ہی چیز ہے. دیٹ از واٹ وی کال CPU, سینٹرل پروسیسنگ یونٹ. نام سے ظاہر ہے یہ ایک ایسا یونٹ ہے جو ایک سینٹرلائز پوزیشن ہے اور اس کا کام ہے کہ یہ سینٹرل تمام جتنی بھی پروسیسنگ ہے یہ اس کو پرفارم کرنے کے لیے رسپانسیبل ہے. ٹھیک ہے نا. یونٹ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی یونٹ کا ورڈ ہو تو آپ کو پتہ ہوتا ہے وہ یونٹ جو ہے ایک کوئی خاص ٹاسک جو ہے وہ اس کے سپورٹ کی جاتی ہے اور وہ اس کے لیے رسپانس. تو اس میں سینٹرل پروسیسنگ یونٹ تمام سینٹرلی جتنی بھی پروسیسنگ ٹاسک ہے اس کو کرنے کے لیے رسپانسیبل ہے. A computer CPU handles all instructions it receives from the hardware and software running on the computer. The CPU is often referred to as the brain of the computer. Computer CPU کیا کرتا ہے؟ It handles all the instructions it receives from the hardware and software running on the computer. جو کمپیوٹر کے اوپر ہارڈ ویئر سافٹ ویئر رن ہو رہا ہے ان سب کے لیے یہ رسپانسیبل ہے. ان سے انسٹرکشنز کو لیتا ہے, ریسیو کرتا ہے, ان کو ہینڈل کرتا ہے. ہینڈلز مین دیٹ کہ یہ دیکھتا ہے کہ ان پٹ انفارمیشن اگر کوئی آ رہی ہے تو اس کو کہاں بھجوانا ہے اور آؤٹ پٹ کو کہاں جانا ہے. تو یہ ساری انفارمیشن کو ہینڈل کرتا ہے. اسی طرح CPU is often referred to as the brain of the computer. موسٹ کامنلی ہم CPU کو کہتے ہیں the brain of computer. آپ زولوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کو معلوم ہے کلیئرلی کہ ہیومن باڈی کے اندر برین جو ہے وہ تمام سینٹرل پروسیسنگ کرتا ہے. اسی طرح کمپیوٹر کے اندر جو ہے CPU تمام پروسیسنگ کرتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو سافٹ ویئر ہوتا ہے جو کہ کمپیوٹر میں چل رہا ہوتا ہے وہ برین ہوتا ہے اور CPU جو ہوتا ہے وہ کیلکولیٹر ہوتا ہے, ایک ایفیشینٹ کیلکولیٹر. سو دونوں باتوں میں کوئی غلطی نہیں ہے, بات ٹھیک ہی ہے. لیکن CPU is actually the brain of the computer. All centrally جتنی بھی پروسیسنگ ہے وہ اس کے اوپر کرتی ہے اور سافٹ ویئر ہی اس کی طرف ساری انسٹرکشنز بھیجتا ہے. تو اس لیے یہ ایک ویریشن بھی اس میں ایڈ کی ہے تاکہ آپ کے نالج میں ہو, کوئی بات غلط نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو آپ کو ایڈیشنلی نالج جو ملے تو آپ اس کو سمجھ جانا چاہیے. ٹھیک ہے. امپورٹنٹ نوٹ آپ کو یہاں پر یہ لکھ رہا ہوں, بتا رہا ہوں کہ موسٹ آف دی پیپلز یا نیو یوزرز, جیسا یہاں پر کہتے ہیں کہ مینی نیو کمپیوٹر یوزرز میں improperly call their computer and sometimes their monitors the CPU. نارملی آپ لوگوں کے بعد لیب میں دیکھیں جو کمپیوٹرز پڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ LED اسکرینس پڑی ہوئی ہیں یا مانیٹر آپ کہہ دیں, اور آپ کے ساتھ وہ مختلف کمپیوٹرز کی پڑی ہوئے ہیں بلیک کلر کے جو ہیں, دیٹ از باکس ٹائپ کے جس کو ہم کیسنگ کہتے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے وہ کمپیوٹر ہوتا ہے. لیکن لوگ اس جو کیسنگ جو بلیک باکس ہے اس کو بھی CPU کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ایکچولی CPU یہ چیز نہیں ہے. وہ کمپیوٹر پورا جو CPU جو آپ کی کیسنگ ہے اس کے اندر پورا کمپیوٹر آپ کا ہوتا ہے, اور جو مانیٹر یا LED اسکرین ہے وہ مانیٹر یا LED اسکرین ہے, وہ CPU نہیں کہلایا جاتا. CPU is actually a chip inside the computer. CPU جو ایک چپ ہے inside the computer. آنے والی فیوچر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ CPU ہوتا کہاں ہے. The picture below is an example of what the top and bottom of an Intel Pentium processor may look. The processor is placed and secured into the compatible CPU socket found on the motherboard. Processor produce heat, so they are covered with a heat sink to keep them cool and running smoothly. آپ کے مدر بورڈ میں زندگی نے ساتھ دیا. انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں مدر بورڈ آپ کو بتاؤں گا, اس کے اندر بھی ایک ایسا, اور لائف بھی جب آپ یونیورسٹی اوپن ہوں گی تو بتائیں گے. مدر بورڈ میں آپ کے پاس اس قسم کی یہ CPU کی ایک موجود ہوتی ہے چپ. اس کے اوپر دیکھیں
ये मुख्तलिफ पिन्स हैं जो निकली हुई हैं, ये इसके ऊपर इस तरह फिट होता है और इसके अंदर ये हीट सिंकर लगा होता है क्योंकि ये बहुत स्पीड पे प्रोसेसिंग करता है तो हीट अप भी होता है। तो ये हीट सिंकर इससे होता है कि वो उसको हीट को जो है कूल डाउन करने के लिए यूज होता है। तो ये जो चिप पड़ी है इसको उल्टा करके इन पोर्ट्स के अंदर ये जो छोटी छोटी आपको होल्स नजर आ रही हैं ये सारी इसके अंदर देखिए ये कट वाली साइड इस कट पे आएगी, ये उल्टा होके इसको इसके अंदर लगा दिया जाता है। तो ये आपके मदरबोर्ड के ऊपर अवेलेबल होती है और उसके ऊपर ये प्रोसेसर की जो है ये प्रोसेसर है आपका जो कि कहलाता है, अब ये इंटेल पेंटियम प्रोसेसर है, ये इसके ऊपर फिट होता है और ये आपका सीपीयू चलाया जाता है। तो एक ओवरव्यू दिया आपको। व्हाट डज द सीपीयू डू? Main function of the CPU is to take the input from the peripherals. Peripherals you know well कि क्या होती हैं, कीबोर्ड, आपका माउस, प्रिंटर एक्सेट्रा, जो जितनी भी डिवाइस ये आपकी पेरिफेरल्स कहलाती हैं। और कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड इंटरप्रेट व्हाट इट नीड्स, ठीक है। सो सीपीयू मेन फंक्शन इज टू टेक द आउटपुट, ठीक है, इनपुट लेता है या किसी भी कंप्यूटर के प्रोग्राम से कोई उनको इंटरप्रेट करता है और जो रिक्वायर्ड होते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही उसको इंटरप्रेट करता है। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम बनाया है कंप्यूटर का a+b जिसका मेन काम है क्या, 2 वैल्यूज को ऐड करना। तो ये उसको चेक करने के बाद उसके मुताबिक ही आपको a+b करके देगा। ये नहीं होगा कि आपने a+b का प्रोग्राम बनाया है और ये आपको a-b करके देगा। तो यही काम इसका है कि ये इंटरप्रेट करता है उसको फिर और देन अकॉर्डिंग टू द नीड्स आपके लिए आंसर करता है। इसी तरह कीबोर्ड के थ्रू आप जो इनपुट एंटर करते हैं तो वो उसी तरह से इनपुट को लेके और उसको उसी तरीके से टाइप करके आपके सामने लाता है। माउस से आप सिंगल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, वो अकॉर्डिंग। इसी तरह प्रिंटर को कमांड भेजते हैं वो प्रिंटर की तरफ ही ले जाते हैं, ना कि किसी और तरफ ले जाता है, ठीक हो गया। इसके अलावा द सीपीयू देन आइदर आउटपुट इंफॉर्मेशन टू योर मॉनिटर और परफॉर्म द पेरिफेरल रिक्वेस्टेड टास्क। इसके बाद जो है सीपीयू जब आपसे इंफॉर्मेशन लेता है उसको अकॉर्डिंग टू द नीड प्रोसेस करता है। देन जो है सीपीयू आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपकी एलईडी स्क्रीन पे या मॉनिटर की स्क्रीन पे, या कोई और जो भी आपने उसको कहा जाए कि प्रिंटर से प्रिंट आउट इस इंफॉर्मेशन का निकाल लो तो वो, या इसको सेव कर दो, तो ये काम सबके सबके हैं सीपीयू के काम है। सीपीयू की हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। द सीपीयू वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय इंटेल at Intel with the help of Ted Hobbs and others in the early 1970s. अर्ली 1970s में डेट्स में आपको कहीं पर 1971 भी नज़र आएगा, कहीं 1970 नज़र आएगा, 72 भी आ सकता है लेकिन ज़्यादातर 77। तो इसीलिए यहाँ पर बात लिखी है अर्ली 1970s। 70s का मतलब 70, 71, 72, 73, 74, 75 कुछ भी हो सकता है। तो 75 से पहले तक कोई भी एक ईयर है जिसके अंदर इंटेल ने विद द हेल्प ऑफ टेड हॉब्स और दूसरे लोगों की मदद से फर्स्ट जो है प्रोसेसर चिप जो है उन्होंने बनाई। द फर्स्ट प्रोसेसर रिलीज बाय इंटेल वाज 4004 प्रोसेसर। ये इसके डायग्राम है, ये इसकी फिगर है, सॉरी पिक्चर है कि ये कैसा था। ये उसी तरह आपके बोर्ड पे चिप है और बोर्ड्स के ऊपर जो है मुख्तलिफ पिन्स लगी हुई हैं और पिन्स के साथ जो है ये आपका इसके ऊपर इंटेल 4004 प्रोसेसर है। ओवर द टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो स्पीड है, जो क्लॉक स्पीड है आपकी प्रोसेसर वो इंक्रीज होती गई और आजकल आपको बहुत एडवांस फॉर्म ऑफ सीपीयू जो है चिप जो है इंटेल की वो अवेलेबल हैं। जैसे आप देख रहे हैं आजकल आपके पास कोर i5, कोर i7, 9 ये सब इस तरह से अवेलेबल आ रहे हैं, ठीक हो गया। Components of the CPU, the most important topics of the today's lecture is the components of the CPU. So इसके ऊपर आपने कंसंट्रेट करना है। आज के जो लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके मुख्तलिफ जो टॉपिक्स अब तक आपने पढ़े हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है the components of the CPU. There are 3 main components of the CPU. There is memory unit, control unit and arithmetic and logic units. एक डायग्राम मैंने शो किया है, आपको अगर याद हो, जहन में आपके आ गई हो कि ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम जो आपके पास है आपने अगर पढ़ी हो तो डायग्राम जो है इट्स व्हाट वी कॉल द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। तो ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर भी कहलाती है। इसको अगर आप साइंटिफिकली कंप्यूटर की डेफिनेशन करें तो कहते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that takes the input through input devices from the external world and process that input data
according to these input instructions and produce a useful information through output devices. تو انپٹ آؤٹ پٹ کے بارے میں آپ لوگ پڑھ چکے ہوئے ہیں. تو اب یہ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے اس کے اندر. کچھ لوگ میموری یونٹ کو ایک سیپریٹ یونٹ بھی کہتے ہیں, لیکن میموری یونٹ آپ کے سی پی یو کا بہت امپورٹنٹ یونٹ ہے جو کہ آپ کی تمام میموری سے ریلیٹڈ جو آپریشنس ہیں یا انسٹرکشنس ہیں ان کے لیے رسپانسیبل ہے. This unit can store instructions, data, and intermediate results. This unit supplies information to the other units of the computer when needed. It is also known as internal storage unit. इसको ISU or the main memory or primary storage or RAM, random access memory भी कहा जाता है. Its size affects speed, power, and capability. Primary memory and secondary memory are the two types of the memories in computer. Yeah. Main function of the memory units are that it stores all the data and the instructions required for processing. It stores the intermediate results of the processing. It stores the final results of processing before these results are released to an output device. All inputs and outputs are transmitted to the main memory. Some others treat the memory or storage unit as a part of the CPU. You can do this too. Some treat it as a separate piece of hardware and that the CPU needs constantly to read to and write from. ٹھیک ہے, کچھ لوگ جیسا میں نے کہا تھا کہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ سی پی یو کا حصہ ہے, اور کچھ لوگ اس سے کیوروسٹی سے کہتے ہیں یہ ایک ایسا یونٹ ہے جس کے ساتھ ہر وقت سی پی یو ریڈ رائٹ آپریشن کے لیے کنیکٹ ہوتا ہے, لیکن یہ اس کا یونٹ نہیں ہے. لیکن یہ آپ کا یونٹ میں آتا ہے. تمام میموری کو جو انفارمیشن جاتی ہے کہ کس نے اسٹور ہونا ہے میموری سے, کس نے آنے جانا ہے, وہ یہ میموری یونٹ کا کام ہے یا اسٹوریج یونٹ کا کام ہے. کنٹرول یونٹ, اب جو دو مین امپورٹنٹ آپ کے پاس ایلیمنٹس ہیں آپ کے ارتھمیٹک اینڈ لاجک یونٹس کے, وہ ہیں کنٹرول سی پی یو کے, وہ ہیں ارتھمیٹک لاجک یونٹ اینڈ کنٹرول یونٹ. The control unit controls the operation of all parts of the computer but does not carry out any actual data processing operation. Functions of these units are, main کیا کہتا ہے کہ control unit جو ہے it controls all the operations of all parts of the computer but does not actually doing the processing. It acts like a traffic signal. جس طریقے سے traffic signal جو ہے وہ ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ٹریفک کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے, جبکہ باقی ٹریفک خود چل رہی ہوتی ہے لیکن کنٹرول اس کو آپ کا ٹریفک سگنل کر ہوتا ہے. تو کنٹرول یونٹ کا کام بھی آپ کے سی پی یو کے اندر لائک اے ٹریفک سگنل ہے. اٹ کنٹرولز آل دی ایکٹیویٹیز کے which data is going to which part of the computer and which data is coming from which what data is coming from the what part of the computer. یہ سب کے لیے یہ responsible ہے. It is responsible for controlling the transfer of data instruction among other units of the. It manages and coordinates all the units of the computers. It obtains the information from the memory, interpret them, and direct the operations of the computer. It communicates with the input-output devices for the transfer of the data and result from storage. تو یہ ان سب کے لیے جو ہے it does not process اور اسٹور ڈیٹا, خود یہ کچھ پروسیس سے اسٹور ڈیٹا نہیں کرتا. یہ تمام ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے درمیان کمیونیکیٹ کرتا ہے, ریزلٹس کو بیچتا ہے, ریسیو کرتا ہے, ٹرانسفر کرتا ہے, یہ سارا کام ہے. یہ سب کام آپ کا کنٹرول یونٹ کر رہتا ہے. اس کے بعد لاسٹ کمپوننٹ دیٹ از دا ارتھمیٹک اینڈ لاجک یونٹ ہے. ارتھمیٹک اینڈ لاجک یونٹ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے, ایک پارٹ ہے اس کا ارتھمیٹک اینڈ دا سیکنڈ یونٹ از دا لاجک. سو اٹ consists of two subsections, namely arithmetic section and logic section. Arithmetic means different operations like addition, subtraction, multiplication and divisions. So جتنے بھی functions ہیں related to arithmetic operations سے related وہ arithmetic section کا کام ہے, اور اسی طرح complex operations جن کے اندر یہی mathematical operations use ہو رہتے ہیں ان سب کو arithmetic section perform کرتا ہے, جس طرح plus, minus, divide اور multiply. Logical section جو ہے, the function of the logical section is to perform the logical operations such as comparing, selecting, matching and merging of data. So جتنے بھی logical operation ہے, یعنی کون سا true ہے کون سا false ہے, which one is better, ٹھیک ہے, میچ کرنا کہ یہ
कलर इससे मैच हो रहा है, मर्ज करना 2 फाइल्स को 1 फाइल में मर्ज करना, ये सब लॉजिकल ऑपरेशन। जिस तरीके से आप देखें इंसानों के अंदर अपनी एक लॉजिक होती है, जब भी आप कोई चीज़ कोई आइटम खरीद रहे होते हैं तो आप उन दोनों को कंपेयर कर रहे होते हैं। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट थिंकिंग, कोई प्राइस वाइज कंपेयर करता है, कोई इंग्रेडिएंट्स वाइज कंपेयर, कोई क्वालिटी वाइज कंपेयर करता है, कोई क्वांटिटी वाइज कंपेयर करता है, ठीक है। इसी तरह जब कपड़े पहन रहे होते हैं तो उसमें मैचिंग कर रहा होता है कि कौन सा कलर किसके साथ मैच करता है। तो ये आपका माइंड की गेम है, और ये जितना भी आप करते हैं फंक्शन, ये सब एक ह्यूमन बींग्स के अंदर एक लॉजिक होती है। मैं उसी से इम्प्रेस होकर ये चीज़ डेवलप की है, लॉजिक यूनिट, जो कि आपके कंप्यूटर में जब कोई इस किस्म का ऑपरेशन आता है ग्रेटर देन लेस देन का, ट्रू फॉल्स का, ठीक है, मर्जिंग का, तो वो आपके पास लॉजिकल करते हैं। सो ये था आज के लेक्चर के बारे में, सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट था हमारा ALU, आपके CPU का सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट था। इसके बाद टाइप्स ऑफ CPU। इन द पास्ट कंप्यूटर प्रोसेसर यूज नंबर्स टू आइडेंटिफाई द प्रोसेसर्स एंड हेल्प identify faster processors. For example, in Intel 80486, ये बहुत पहले की बात है, आपको बता रहा है कि आपके नंबर से पता चलता था कि कौन सा प्रोसेसर कितना सही। जिस तरीके से ये एक सीरीज थी जो कि मशहूर थी 486, तो ये 386 से ज़्यादा पॉपुलर थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो गया, और जब पेंटियम का वक्त आया और उसको 586 भी कहा जाता है, तो फिर पेंटियम जो था वो 486 से फास्ट था। और इसी तरीके से आपके पास जिस तरह आजकल Core i7, Core i8, Core i9 आ रहे हैं, तो वो सारे जो हैं इसी किस्म के जो है नंबर से पता चलता है कि कौन सा कितनी स्पीड वाला है, ठीक हो गया। और इसी तरीके से इंटेल के अलावा भी आपको जो है प्रोसेसर जो है सेलेरॉन में, एटलॉन्स में, ड्यूरॉन्स में भी मिलते हैं, तो आजकल अवेलेबल है मार्केट में। इसके साथ साथ आपकी स्पीड के साथ साथ जो है कुछ फीचर्स और हैं, जिसमें 34 बिट और 64 बिट के आर्किटेक्चर को भी देखा जाता है। बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि 32 बिट वाले लैपटॉप से कंप्यूटर्स पे नहीं चलते। इसी तरीके से कुछ स्पीड की वजह से, कुछ और रिक्वायरमेंट्स की वजह से, ग्राफिक कार्ड्स की वजह से भी नहीं चलते, तो इसको भी देखा जाता है। तो ये आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी थी। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कुड अ कंप्यूटर वर्क विदाउट अ CPU? क्या कंप्यूटर CPU के बगैर काम कर सकता है? तो इसका स्ट्रेट अवे आंसर है नो। ऑल कंप्यूटर्स रिक्वायर सम टाइप ऑफ CPU, चाहे वो स्लो स्पीड का हो, एवरेज स्पीड का हो, वेरी फास्ट स्पीड हो, ऑल कंप्यूटर्स रिक्वायर CPU। तो ये था आज के लेक्चर के मेन टॉपिक्स। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जो नोट्स मैं दे रहा हूँ ये उन्हीं नोट्स में से प्रेजेंटेशन की मैंने वीडियो बनाई है और आपको शेयर की है। नोट्स में और भी इंफॉर्मेशन होगी, ज़रूरी नहीं है आपको सारी चीज़ें उसमें से याद करने के लिए, लेकिन इंफॉर्मेशन जितनी ज़्यादा पढ़ें बेस्ट है, ताकि आपको आगे हो। ये आखिरी 2 स्लाइड्स में आपके नॉलेज के लिए शेयर करूँ, क्योंकि आप कंप्यूटर पढ़ चुके हैं और आप लोग जब फ्यूचर में कहीं पर भी इंटरव्यू या टेस्ट के लिए जाएंगे और अगर उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड या जनरल नॉलेज में कंप्यूटर का कोई छोटा सा भी MCQ या ऑब्जेक्टिव आया, तो उसमें ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है। बिट, जैसे कि आपको मालूम है, अगर नहीं भी तो मैं बता रहा हूँ कि बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो कि 0 और 1 की फॉर्म होते हैं। बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे आप देखते हैं 0-1 लिखा होता है, तो जब आप 0 प्रेस करते हैं तो वो डिवाइस ऑफ हो जाती है और 1 करते हैं तो ऑन हो जाती है। तो ये 0-1 आपके ध्यान में होना चाहिए। निबल जो है 4 बिट्स कंबाइन होकर 1 निबल बनाते हैं और 8 बिट्स कंबाइन होकर 1 बाइट बनाते हैं। इसी तरह कंप्यूटर में जो वर्ड्स हैं वो डेटा स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, और ये वर्ड्स 8 बिट से लेकर 96 बिट तक एक कंप्यूटर के अंदर हो सकते हैं। डिपेंड्स करता है कि कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन है और कौन सी टाइप्स है। हाईएस्ट स्टोरेज यूनिट जो पहला आपको नजर आ रहा है 1 KB इज इक्वल टू 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। ये देखें, ये MCQ ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में जहाँ पर भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आ जाता है कि 1 KB इज इक्वल टू हाउ मच बाइट्स। सो 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 KB। इसी तरह 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 MB। 1 terabyte is equal to 1024 GB and 1 petabyte is equal to 1024 TB टेराबाइट। ठीक हो गया। नॉर्मली आपकी सेकेंडरी मेमोरी जो होती है इन फॉर्म ऑफ गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स और पीटाबाइट्स में होती है, और आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है जो कि रैम है आपको अब गीगाबाइट्स में अवेलेबल होने लगी है।
اسٹارٹ میں وہ تو ایم بیز میں تھی، پھر کے بی ایم بیز میں تھی، پھر وہ گیگا بائٹ میں اب آپ کو مل رہی ہے، اور ایسے ایسے ٹیرا بائٹ تک جا رہی ہے. تو یہ تھا آج کے لیکچر